नमस्कार, आपका विद्या फार्मेसी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स। डिप्रेशन कुछ लोगों को कई चीज़ों से घबराहट होती है। किसी एक चीज़ पर उनका कंट्रोल नहीं रहता है। ये एक मानसिक स्थिति है जब आप खुद को हेल्पलेस यानी कि बेबस महसूस करते हैं। इसे एंजाइटी कहते हैं। लेकिन जब आप होपलेस महसूस करने लगते हैं यानी कि आप अपने भविष्य से उम्मीद खो बैठते हैं, तो इस मनोस्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर होता है जो बहुत ही आम है। डॉक्टरों के अनुसार नकारात्मक बीमारी है जो सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता और बुरे से प्रभावित होती है। डिप्रेशन के परिणाम स्वरूप समय बर्बाद करते हैं और उत्पादकता कम हो सकती है। बहुत बार डिप्रेशन पुरानी अवस्था स्थितियों को प्रभावित कर सकता है। डिप्रेशन या अवसाद के कारण जो स्थिति खराब हो सकती है उसमें शामिल है गठिया, दमा, हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, मोटापा इत्यादि। प्रकार में देखा जाए तो मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, persistent डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, पेरिपोर्टम डिसऑर्डर, प्रीमेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। आइए इसके लक्षण देखते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन एक बार ही होता है, पर कई एपिसोड में हो सकता है। इन एपिसोड्स में डिप्रेशन के लक्षण दिन भर रह सकते हैं और बहुत बार हर दिन रहते हैं, जिनमें निम्न शामिल है उदासी की भावना के साथ आंखों में आंसू, अकेलापन और निराशा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, चिड़चिड़ाहट के साथ निराशा की भावना, सामान्य क्रियाओं में रुचि न लेना जैसे सेक्स, किसी खेल में रुचि न लेना, सही से नींद न आना जिसमें अनिद्रा और सोना शामिल होता है, थकान और ऊर्जा से कमी होना, छोटे से छोटे कार्य के लिए अधिक प्रयास करना, भूख न लगना और वजन का घट जाना, या किसी भोजन की लालसा और वजन बढ़ जाना, चिंता, व्याकुलता और बेचैनी होना, सोचने, बोलने और शारीरिक गतिविधियों में कमी आना, अपने को योग्य या दोषी महसूस करना, पुरानी विफलताओं के लिए अपने आप को दोषी मानना, सोचने, ध्यान केंद्रित करने या देखने और निर्णय लेने में परेशानी होना, मृत्यु के ख्याल आना या आत्महत्या का बार बार प्रयास करना, अस्पष्ट शारीरिक समस्याएं हैं जैसे पीठ दर्द या सिर दर्द। कारण में देखा जाए तो मस्तिष्क संरचना, दिमाग का आगे का लोब कम सक्रिय है तो अवसाद का जोखिम अधिक होता है। मेडिकल कंडीशन जैसे पुरानी बीमारी, अनिद्रा, पुराना दर्द या अटेंशन डेफिसिट
हाइपर एक्सिटिविटी डिसऑर्डर, शराब और दवाओं का दुरुपयोग, आत्मसम्मान की कमी या आत्म आलोचनात्मक होना, मानसिक बीमारी का व्यक्तिगत इतिहास। कुछ दवाएं भी डिप्रेशन का कारण हो सकती है। तनावपूर्ण घटनाएं जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, आर्थिक समस्याएं या तलाक। कुछ लोगों के पास उनके अवसाद के लिए कोई कारण नहीं होता। देन हम स्टार्ट करेंगे कि एंटी डिप्रेशन में ड्रग कौन कौन से ड्रग यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड। एमिट्रिप्टिलिन शुड अंडर द brand name Elavil. It is a tricyclic antidepressant primarily used to treat major depressive disorder and a variety of pain syndromes such as neuropathic pain, fibromyalgia, migraine and tension headache. Because of its side effects, amitriptyline is generally considered a second-line therapy for this indication. Uses used to treat mental mood problems such as depressions. It may help improve mood and feelings it well-being, relieve anxiety and tension, help you sleep better and increase your energy level. Stability and storage condition. It should be stored in well-closed container. Storage temperature should be between 20 to 25 degrees Celsius. It should be protected from light. Formulation: tablet, oral solution. Brand name: Elavil, Triptizolone, Imipramine hydrochloride. This second drug. Imipramine sold under the brand name Tofranil. It is a tricyclic antidepressant (TCA), mainly used in the treatment of depression. It is also effective in treating anxiety and panic disorder. The drug is should also used to treat bedwetting. Imipramine is taken by mouth. Uses: it is used to treat depression. It is also used for the treatment of nighttime bedwetting, enuresis in children. It improves your mood, sleep, appetite and energy level and may help restore your interest in daily living. Storage and stability. It should be stored in a well-closed container. Storage temperature should be between 20 to 25 degrees Celsius. It should be protected from light. Formulation: tablet, capsule. Brand: Tofranil, Imipramine. Then third drug है Fluoxetine. Fluoxetine sold under the brand name Prozac and Cefamine. It is an antidepressant of a selective serotonin reuptake inhibitors SSRI class. It is used for the treatment of major depressive disorder, obsessive compulsive disorder COD, and
panic disorder, PD. It has also been used to treat premature ejaculation. Fluoxetine is taken by mouth. Uses: it is used to treat depression. To treat obsessive compulsive disorder and bulimia. Stability and storage: it should be stored in well-closed container. Storage temperature should be between 20 to 25 degrees Celsius. It should be protected from light. फॉर्मुलेशन: कैप्सूल में आते हैं, टैबलेट सॉल्यूशंस में आते हैं. ब्रांड नेम: प्रोजैक, सेराफेम, फ्लूडैक. Then Venlafaxine sold under the brand name Effexor. It is an antidepressant medication of a serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. It is used to treat major depressive disorder, generalized anxiety disorder, panic disorder, and social phobia. Uses: it is an antidepressant medication. It is used for the treatment of major depressive disorder, generalized anxiety disorder, panic disorder, and social anxiety disorder, social phobia. Stability and storage. Formulation: capsule, tablet. Brand name: Effexor. Then fifth है duloxetine. Duloxetine sold under the brand name Cymbalta. It is a medication used to treat major depressive disorder, generalized anxiety disorder, fibromyalgia, and neuropathic pain. It is taken by mouth. Use: it used to treat depressions and anxiety. It also used to treat nerve pain such as fibromyalgia and can be used to treat stress. Duloxetine comes as a capsule and take by mouth. Stability and storage: it should be stored in well-closed container. Storage temperature should be between 20 to 25 degrees Celsius. It should be protected from light. Formula: tablet, capsule. Brand name: Cymbalta, Duzela, Duloxin. Then sixth है sertraline. Sertraline sold under the brand name of Zoloft. It is an antidepressant of the selective serotonin reuptake inhibitors. Sertraline is effective for panic disorder, social anxiety disorder, generalized anxiety disorder, and obsessive compulsive disorder. Uses: sertraline is used to treat depression, obsessive compulsive disorder, panic attack, post traumatic stress disorder, stability and storage.
It should be stored in well-closed container. Storage temperature should be between 20 to 25 degrees Celsius. It should be protected from light. Formulation: tablet and oral solution. Brand name: Zoloft, Certa, Cervel. Then सातवां है Citalopram. Citalopram sold under the brand name Celexa. It is an antidepressant for the selective serotonin reuptake inhibitors. It is used to treat major depressive disorder, obsessive compulsive disorder, panic disorder, and social phobia. It is taken by mouth. Uses: it is used to treat depression, panic attack. Storage and stability: it should be stored in a well-closed container. Storage temperature should be between 20 to 25 degrees Celsius. It should be protected from light. Formulation: tablets, oral solution. Brand name: Celexa, Citalopram, Cetram. Then आठवां है Escitalopram. Escitalopram sold under the brand name Cipralex and Lexapro. It is an antidepressant of the selective serotonin reuptake inhibitors. Escitalopram is mainly used to treat major depressive disorder or generalized anxiety disorder. It is taken by mouth. It is available commercially inclusive as a oxalate salt. Uses: it is used to treat depression, anxiety, obsessive compulsive disorder, panic attack. Storage and stability: it should be stored in well-closed container. Storage temperature should be between 20 to 25 degrees Celsius. It should be protected from light. Formulation: tablet. Brand name: Lexapro, Cipralex. Then ninth है Fluoxamine. Fluoxamine sold under brand name such as Luvox or Fevarin. It is an antidepressant of the selective serotonin reuptake inhibitor. It is primarily used to treat major depressive disorder and obsessive compulsive disorder, but it also used to treat anxiety disorders such as panic disorder, social anxiety disorder, and post-traumatic stress disorder. Uses: it is used to treat obsessive compulsive disorder, social anxiety disorder. Storage and stability: it should be stored in a well-closed container. Storage temperature should be between 20 to 25 degrees Celsius. It should be protected from light. Formulation: capsule, tablet. Brand name: Luvox, Fevarin. Then last, paroxetine. Paroxetine sold under the brand names Paxil and Seroxat. It is an antidepressant of the selective serotonin reuptake inhibitor. Proxetine sold under the brand name
Paxil and Seroxat. It is an antidepressant of the selective serotonin reuptake inhibitor. It is used to treat major depressive disorder, obsessive compulsive disorder, panic disorder, social anxiety disorder, post traumatic stress disorder, generalized anxiety disorder. It has also been used in the treatment of premature ejaculation and hot flashes due to menopause. It taken by mouth. Uses: it used to treat depression, obsessive compulsive disorder, panic attack, anxiety, or post traumatic stress disorder. Stability and storage: it should be stored in a well closed container. Storage temperature should be between 20 to 25 degrees Celsius. It should be protected from light. Formulation: tablet. Brand name: Paxil, Seroxat.